एक इंटरव्यू में रतन टाटा से पूछा गया कि इतना पैसा कमा कर क्या वो खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि सच्ची खुशी पाने के लिए मुझे 4 पड़ाव पार करने पड़े। पहले पहले मुझे लगता था कि जब मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा। पैसा भी कमा लिया पर खुशी नहीं आई। फिर महंगी चीजें इकट्ठा करने लगा। फिर जल्दी ही मुझे ये भी समझ में आ गया कि महंगी चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। तीसरा पड़ाव तब आया जब मुझे भारत और अफ्रीका का 95% ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट का मैं मालिक बना, पर खुशी तब भी नहीं मिली। फिर आया चौथा पड़ाव। एक दोस्त ने मुझे 300 व्हील चेयर खरीदने को कहा। वो मुझे जिद करके अपने साथ अनाथ आश्रम में ले गया और मेरे हाथ से चेयर डिस्ट्रीब्यूट करवाई। तभी एक बच्चे ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तो बच्चे ने कहा नहीं, मैं आपका चेहरा याद करना चाहता हूँ कि जब हम स्वर्ग में फिर से मिले तो एक बार फिर से आपको धन्यवाद दे सकूं। ऐसे महान लोग हैं मेरे देश में, ये सोच कर ही मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरांग रावल और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल वायरल विस्टा नॉलेज पर। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं, भारतीय उद्योग के एक महत्वपूर्ण नाम टाटा समूह के बारे में। टाटा समूह भारत के अग्रणी उद्योग समूहों में से एक है और इसका इतिहास और योगदान काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम टाटा समूह की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसने भारतीय उद्योग में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। टाटा समूह के मालिक का पूरा इतिहास कुछ इस तरह है। टाटा परिवार का नाम भारतीय उद्यमिता और समाजसेवी जमशेदजी टाटा से जुड़ा है, जिन्होंने सन 1868 में टाटा सोन्स कंपनी की स्थापना की। एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। आज की हमारी वीडियो है श्री जमशेदजी नुसरवानजी टाटा जी के बारे में। श्री जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की। कहा जाता है कि जमशेदजी टाटा इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि जवाहरलाल नेहरू उनको वन मैन प्लानिंग कमीशन कहकर रेफर किया करते थे। फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ तरीन अदाकार अमिताभ बच्चन अपना वाकया सुनाते हुए कहते हैं कि मेरे फिल्मी कैरियर के अरूज पर मैं एक बार हवाई सफ़र कर रहा था। जहाज़ के अंदर मेरे साथ वाली सीट पर एक मुनासिब सी उम्र का सादा सी टी शर्ट और पैंट पहने हुए एक शरीफ सा आदमी बैठा हुआ था। अपने हुलिये से वो एक मिडिल क्लास फैमिली का दिखाई दे रहा था, मगर एक तालीम याफ्ता होने की झलक भी दिखाई दे रही थी। जहाज़ में मौजूद दूसरे मुसाफिरों में से काफ़ी सारों ने मुझे पहचान लिया था, लेकिन उस शरीफ आदमी ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। वो एक अखबार पढ़े जा रहा था, साथ ही चाय भी पी रहा था। वो शरीफ आदमी कभी अखबार पढ़ता, कभी थोड़ी देर बाद जहाज़ की खिड़की से देखना शुरू कर देता। मैंने एक बार उसे हल्की सी मुस्कुराहट से देखा ताकि वो कुछ बोले। उसके जवाब में वो भी हल्का सा मुस्कुराया, मगर कोई बात ना की। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैंने खुद ही बात शुरू करने के लिए कहा हेलो, जिसके जवाब में उसने भी कहा हेलो। इसके बाद हल्की फुल्की बातचीत से शुरू होने वाली गुफ्तगू सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री पर पहुंच गई। मैंने पूछा कि आप फिल्में देखते हैं? उसने कहा कि नहीं, कभी कभार कई साल पहले एक फ़िल्म देखी थी। मैंने कहा मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही काम करता हूं। उसने कहा वाकई, क्या करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में? मैंने कहा मैं एक अदाकार हूं। अदाकार का सुनकर उस शरीफ इंसान ने सिर्फ इतना कहा कि बहुत अच्छा। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई और ना ही मैंने उस शरीफ इंसान से कोई बात की। लेकिन जब जहाज़ ने लैंड किया, मैं अपनी सीट से उठने लगा तो मैंने उससे कहा कि आपके साथ सफ़र करके अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अमिताभ बच्चन हूं। उस शरीफ इंसान ने मेरा हाथ दबाया और हंसा और कहा कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम JRD टाटा है, चेयरमैन ऑफ टाटा इंडस्ट्री। उसको मिलने के बाद मैं घर रवाना हुआ। मैंने उस दिन ये सबक सीखा कि आप अपने आप को चाहे कितना भी बड़ा समझ लें, कहीं ना कहीं आपसे भी बड़ा मौजूद होता है। इसलिए अपने आप को बड़ा मत समझो, आजिज़ी सबसे बड़ी चीज़ है। इसके बाद उनके पोते JRD टाटा ने समूह को नया दिशा देने का काम किया। रतन जी टाटा ने व्यापार और उद्योग में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने टाटा स्टील कंपनी को मजबूत किया और विभिन्न क्षेत्रों में नए परियोजनाओं की शुरुआत की, जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा टीटी के अंतर्गत रतन टाटा ने समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान किया।
उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टिफार जैसे शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। 2021 में रतन टाटा ने न्यारा स्टील की खरीदारी के बाद समूह के नेतृत्व से संबंध तोड़ने का फैसला लिया। वरिष्ठ उद्यमिता नटराजन चंद्रशेखर ने उनकी जगह ली। Ratan Tata, Indian businessman, industrialist, and philanthropist. He was the chairman of Tata Group from 1991 to 2012. His early life was quite normal, and in 1962, he joined the Tata Group. Under his leadership, he globalized the Tata Group by purchasing foreign companies. In 2000, the group purchased Tata for 431.3 million, and in 2004 it purchases truck manufacturing company Dawe Motor for 102 million. In 2007 he purchases a steel manufacturing company Chorus Group for 11.3 billion, and it was the biggest corporate takeover by an Indian company. In 2008 Tata Motors purchased two British car brands Jaguar and Land Rover. It was a $2.3 billion deal, the biggest deal done by an Indian automotive firm. Ratan Tata also has donated 60 to 65% of his income to charity. इस प्रकार टाटा समूह का इतिहास उद्यमिता, समाज सेवा और व्यावसायिक मानकों के प्रति आदर भावना के साथ जुड़ा है। टाटा समूह का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण और सांगड़ा हुआ है। यह ग्रुप भारतीय उद्योग और वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाटा समूह के प्रमुख हिघलाइट्स। टाटा समूह की शुरुआत जमशेदजी टाटा द्वारा 1868 में की गई थी, जब उन्होंने कॉटन मिल उद्योग में निवेश किया। समूह का पहला उद्यम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी था, जिसे 1907 में शुरू किया गया था। टाटा समूह ने अपने उद्योग में महत्वपूर्ण विकास किया, जैसे कि विद्युत, स्टील, उच्च तकनीकी उत्पाद, टेलीकॉम, अनुपातित ग्राहक उत्पाद। 2009 में टाटा मोटर्स ने टाटा नानो को लॉन्च किया, जो दुनिया के सबसे सस्ते कार के रूप में जानी जाती है। टाटा समूह ने सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने जमशेदजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज के विकास और कल्याण को सुनिश्चित करना है। टाटा समूह ने शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान किया है। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने में सहायक रहे हैं। टाटा समूह विश्व भर में अपनी प्रतिष्ठित और आदर्शनीय पहचान रखता है और उसकी वैश्विक उपस्थिति उद्यमिता, नैतिकता और उच्च मानकों पर आधारित है। टाटा समूह ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अनूठी पहचान बनाई है और उसका योगदान भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। हाल के समय में टाटा समूह कई व्यवसायों में शामिल है। कुछ मुख्य व्यवसाय क्षेत्र जिनमें टाटा समूह कार्यरत है, जैसे कि उद्योग। टाटा समूह इस क्षेत्र में इस्पात, टाटा मोटर्स, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा पावर और अन्य कई कंपनियों के माध्यम से काम करता है। टेलीकॉम। टाटा समूह का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय टेलीकॉम है, जिसमें टाटा टेली सर्विसेज और टाटा स्काई जैसी कंपनियां शामिल हैं। टाटा इलेक्ट्रिक। यह क्षेत्र नवाचारी ऊर्जा समाधानों में काम करता है, जैसे कि सोलर और बैटरी तकनीक। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS भारतीय IT सेवाओं की एक बड़ी कंपनी है और विश्व भर में सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करती है। टाटा केमिकल्स। यह कंपनी खाद्य सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स, खाद्य उत्पादों की प्रक्रियान्विति और केमिकल उत्पादों के उत्पादन में काम करती है। टाटा मोटर्स। यह कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपने उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि पैसेंजर कार, ट्रक और बस। One of the questions I wanted to ask you is that, as we look at the youth, as we look at shaping India, there's a certain integrity, there's a certain ethos that we want to develop over time. And one of the things the Tata House is known for is its integrity and ethos. In what way has it been integrated? You've been there since you were young. In what way was it integrated into you? In what way do you take it to the next generation? Well, I think the integrity was embedded in the organization over 100 years ago. Maybe at a time when, without integrity, a company would be considered to be unacceptable. Today, that's a little different. And when I returned from the US, which is partly an accident, I had the role model of J.R.T. Tata, who lived absolutely by the tenets of integrity that the founding fathers had left behind.
And there was no issue of any deviation from it. He didn't himself deviate, nor did he accept anybody else who would deviate. So it was deeply ingrained in the organization throughout. All I did when I took over was protect it, because I felt that needed vigorously to be protected, because that is what made us different. You just said something, you came back accidentally. What did you mean by that? When I finished college, the only thing I looked forward to was going where it was warm and not cold. That wasn't the accident. I worked in Los Angeles for a period of time. Very happy there, doing very well monetarily. My grandmother fell ill and asked for me, and I returned and never went back to the US. So that was the accident. Okay. You were just saying that, that was the norm at that time. It may not be so today. So when you look at the young people, the possibility that there is for India, what is your feeling when you look at young companies? What do you feel they have, and what do you feel they should keep? Maybe I can answer your question by deviating a bit from the answer. Sure. Being at this event today, and events like this, I have a sense of great remorse. Remorse that I'm in my 70s and not in my 40s. Because at this point in time, and the young people are coming into their own and having an opportunity to express themselves, to innovate, to establish enterprises. And that's terrific. And that's what I would have loved to participate in. And I'm sorry that our ages are different. Well, thank God you're mentally only 30, so you've got a long ways to go. The problem is, to be frank, that if you don't try to regulate yourself and say that your time is up, who is to tell you that your memory's fading, or that you're getting a little senile, or that you're getting hard of hearing, or that you don't see very well? So the best thing is to move aside and leave way for the young people who are going to be the future of this country to have their head. And I think that's why an event like this and what you're doing to encourage the young people is music to my ears. X Prize has struck me as being a tremendously strong motivator of innovation. In every way, X Prize is a tremendous motivator of today's times. And I hope the momentum that Peter's been able to create will continue and accelerate over the years, not only in the US, but now in India as we brought it here. So, Xenia, to continue on that, we brought X Prize to India, you're leading the efforts here. What would you like to see happen? What would you like to have this prize do in the Indian community? I'm hoping that over the next few years, we're able to launch a few prizes in different sectors, addressing what now seems impossible in water, in energy, in how we view and deal with waste, possibly in corruption, women's issues. So hopefully I'd like to see those few prizes come to fruition pretty quickly. But the prize is one part of the equation. The thing that really makes the prize work are the innovators, the teams that apply to compete for the prize. And I'm really hoping to see innovators from all parts of this country, both geographically and from all stratas of society, economic stratas especially. I would consider, in understanding what your success statement is also important to examine what you don't want, right? So I would hate to see an X Prize where the teams were only from the IITs,
were only from the R&D departments of big organizations, big companies, that would actually be kind of a failure. But it would be wonderful to see young innovators, old innovators, innovators that come from the rising billion, innovators that come from rural areas. And then, of course, the challenge for us at XPRIZE is how do we level the playing field so that those innovators can truly participate? Because it's good enough to say, you have to apply and then you get in, but it's a lot more than that. So how do we at XPRIZE, especially in India, how do we level the playing field so that innovators from a rural part of India, from rural Kenya, who are competing for a prize in India, can truly play on the same level as a team from IIT? So that's what I'd really like to see. So the other thing is, about a prize is usually, we know about the purse, what you get. But one of the things that XPRIZE does in a great way is defining the problem itself. So you want to tell us a little bit about how you go about doing that? Sure. At XPRIZE, we call ourselves solution agnostic. We don't care. We don't care at all whether, it's an app, it's a device, it sits on your head, it's hardwired into your brain, it's a nano chip that's inserted in your wrist, or it's something that you drag around the streets of Bombay, right? So we really don't care what the solution looks like. We are more interested in defining the problem in a way that is broad enough to attract crazy ideas and crazy solutions. So, we are going to see a couple of people later. So maybe you can tell us how you defined the problem for the LunarX, Google LunarX Prize. How did you define it? Sure. Well, the process is very long, right, that, to come to this, and there are lots of experts involved, and everything is scientifically backed. But yes, it distills down to 4 simple things for the Google LunarX Prize. You have to take off from Earth, you have to land on the moon, and then you have to move 500 meters. Again, we don't care if you hop, skip, scoot, jump, rove, whatever you want to do. And then you have to send back high-resolution digital imagery, send us a message from the moon to prove you're there. So those 4 simple guidelines, all of our X prizes are distilled down to those 3, 4, 5 simple, seemingly simple things that the winning team has to do. Lakshmi, if you think about it, we're like a race. So you have to have a very well-defined finish line. Because if you don't know you've won the race, then that's no good for anybody. Correct. So we really define that finish line in terms where nobody can dispute when you have finished. Maybe you can tell for the tricorder also what's the... Yeah, the tricorder, a handheld device or a device that fits in the palm of your hand that non-invasively can diagnose up to 15 health conditions. Okay. Yes. So I would like to ask both of you the last question of, we have, numbers, give or take, over 600 million people under the age of 35 in India alone. And if you look at the world, there's a lot of young people. What do you think we need to do, we could do to create a sense of responsibility and integrity into this crowd? In what way do you think we can also, teach is not the right word, imbibe values and not just results? Which is what XPRIZE journey is all about. It's about the journey, it's not about the results. In what way can we imbibe that in the way they are going to evolve as very, very successful people? I think we need a whole new breed of superheroes. And forums like Inc. bring those to the forum. I think we need heroes that have everyday backgrounds that are truly achieving amazing things, both small and large, in all kinds of different areas. And we need their stories to be brought to the forefront so that the younger generation, and not just the younger generation,
my generation, the older generation, we all have new heroes every day, new role models every day, people to learn from that aren't just all about how rich they made it or how famous they made it because of a particular talent. It's much, much more than that. And for a country of 2.5 billion people, we really need a whole new brand of superheroes, a whole new breed of them. Tata, what would you say? What would you like to? I feel India, our country, has one tremendous attribute in the 1 billion plus people, and that is that we have often been called a country of shopkeepers, or a country of individuals who seek to have their individual visibility. It may be a pawn shop, it may be a larger shop, it may be some activity, but we are entrepreneurs, DNA-wise. We, as a country, we have ideas. What we don't have adequately is we don't have the opportunity to express ourselves. We don't have an infrastructure that helps finance us. We don't have an environment necessarily that motivates us or supports us. Us meaning the entrepreneur, the young entrepreneur. The worst thing that happens to us, I think, is that a young entrepreneur has an idea. It's an idea, it may be a way out idea. And the older person says, how successful has this been elsewhere? How many people have succeeded or utilized it? This is the kiss of death. No new idea is ever going to happen, but we have that potential. And I think if we have the motivators, the supporters, the equivalent of a venture capital community, then India is going to really go exponentially into this new era. And just like the United States has done over the last several decades, who would have thought that we have some of the companies that exist today and are considered highly valuable would be there? Who would have thought of Microsoft or Apple or SpaceX or any of these new names? They didn't exist some time ago. No one would have thought that Elon Musk could himself create a company that would compete with NASA. It would have been unheard of. So I think we have the potential. We have the heroes, but they're embedded in a more traditional structure. We need to unleash them. And I think, in wrap up, I'd like to say that as we unleash them, as we get the younger people, I think they need mentors or elders, parents that can guide them the right way too. So to have all of you with your experience guide a lot of the young people. So I just want to say today I've successfully completed checking off Ratan Tata on my list. So thank you very much. And I hope this is just the beginning. And thank you so much for being here.